सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का शर्लॉक होम्स द डेविल सॉर्टर के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आप लोगों का दोस्त शुभंकर। देख सकते हो दोस्तों, पिछले दिन हमने यहाँ तक गेम को छोड़ा था, तो यही से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देख सकते हो, रात को हम यहाँ पर आ चुके हैं इस फैक्ट्री में। तो यहाँ पर इसको अच्छा लॉक को खोलना पड़ेगा। चलो, थैंकफुली खुल गया। अच्छी बात है, ये आसानी से खुल गया। ठीक है, तो ये तो बॉयलर है। हाँ, तो ये पर कुछ चीज़ें तो हम स्टडी करके आए थे, तो यहाँ पर देखते तो हमें किसी तरह से इसके अंदर जाना पड़ेगा। ओके, हाँ। How can we reach the balcony? The balcony doors open. तो हम बालकनी से ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, बालकनी डोर है। अच्छा, इसको वापस पहले जैसा कर देते, तो इससे हम ठीक है लाइन्स ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे क्या हो सकता है? Nothing here but fence, but there is more to it than that. I can't move this. Something is blocking its path. अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये किससे जुड़ा है? ये उस तरफ से जुड़ा है। अच्छा ठीक है। अरे वाटसन, मेरी मदद तो करो यार। वाटसन कुछ नहीं कर रहा है। चलो, हो गया। अब इस तरफ चलते। अब शायद इसको मैं आगे कर पाऊंगा। हाँ, तो एक चीज़ हो सकती है, शायद इसको हम सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके चढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। शर्लॉक होम्स इसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके चढ़ रहे हैं ऊपर। ओके, चलो। Watson, I need your help. अच्छा, तो वाटसन मदद करेगा इसको हटाने में। हाँ, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? अच्छा, इस मिडिल वाले से। ओके, समझ गया। हाँ, चलो ये तो हट गया। अभी शर्लॉक होम्स सामने जा सकते हैं। अभी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह होने से पहले हमें यहाँ से काम करके निकलना होगा, वरना अगर लोग आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, इस तरफ तो आ गए। ठीक है। अभी Watson, I need your help. अभी इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाते। अभी करना क्या है? यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर कुछ तो लाना पड़ेगा। अच्छा, ये बॉक्स को तो मैं ला सकता हूँ। हाँ, ये ऐसे हो सकता है। ओके, चलो अब इसको घुमा लेते हैं इस तरफ के लिए। चलो, हो गया। अब इसको इस तरफ से धक्का देते।
If only I had access to a free chair. तो हम बस अभी बैल्कनी पहुंचने ही वाले। डॉग वाटसन ने बहुत ज़्यादा मदद की अभी। उम्मीद करते हैं वाटसन जैसे दोस्त हर किसी को मिले, यही दुआ है। कम ऑन। ओ पहुंच गए, क्या बात है। Holmes, I'm here. Can you let me in? चलो हम बैल्कनी पहुंच के फाइनली। अभी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलो दरवाज़ा खोल देते। डॉक्टर वाटसन आ जाओ अंदर। आ जाओ वाटसन, आ जाओ। A slot. Yeah, It but appears yeah. to be part of some mechanism. A Mayan pyramid. इसने तो अपना ऑफिस ही एकदम पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना के रखा है, मायन पिरामिड। कोई ऐसा वैसा पिरामिड नहीं। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं क्या? There's a recurring theme that connects all of these sculptures. यहाँ पर कुछ है? यहाँ पर कुछ नहीं है शायद। ये तो कुछ बेसिक मैप्स दिख रहे। अच्छा यहाँ पर कुछ है। Obviously for a dagger. Mayan period, I think. I'll need a dagger to work the mechanism. अच्छा तो इसके लिए डैगर चाहिए। And find out what Mr. Mali is hiding. अच्छा डैगर बनाना पड़ेगा इसके लिए, मतलब ओहो अब पूरी तरह से मतलब एकदम काम कर, ऐसे एक चाबी बनानी पड़ेगी डैगर। This blank has too many defects. I'll need to start again. अरे यार ये मुश्किल हो रहा है थोड़ा। रेडी? This blank has too many defects. I'll need to start again. यार ये बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आ रहा है।
This blank has too many defects. I'll need to start again. अरे यार चलो फाइनली बन गया। I hope this dagger fits. चलो फाइनली बन गया। 2 ट्राई करने के बाद अभी ये डैगर फाइनली बन चुका है। क्या आ गया? अरे डैगर पॉकेट में छुपा लिया क्या? चलो ओ बाप रे। अच्छा तो यही सीढ़ियाँ बन जाती है। Another statue of Takunuman. यहाँ पर और एक स्टैचू रखी है इसने। Locked. It can move, but a part of the mechanism is missing. Be careful, Watson. Unless you want to be speared by Takunuman. अच्छा तो हम इसके पार्ट्स अगर जोड़ दे तो क्या पता ये चलना शुरू हो जाए। हाँ हाँ ठीक है। रिस्टोर द ऑटोमेशन मैकेनिज्म बाय कनेक्टिंग ऑल ऑफ इट्स वेयर्स अक्रॉस ऑल 3। ये लगता है यहाँ पर जाएगा। The chain doesn't fit here. The chain... The chain doesn't fit here. The chain doesn't fit here. The chain doesn't fit here. The chain doesn't fit here.
The chain doesn't. The chain doesn't fit here. The chain doesn't. The chain. यार सब कुछ तो चल रहा है फिर भी ये क्यों नहीं चल रहा? सब कुछ सारे मैकेनिज्म काम कर रहे हैं फिर भी इसको इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है यार? अब तो मशीन चलना चाहिए ना यार। क्या हुआ है इसे पता नहीं। स्किप कर देना अच्छी बात है। यार ये तो असलियत में इसने भाला फेंक दिया। ये तो मतलब इसी टेकुनुमान के स्टैचू की तरह हो गया जो मतलब क्लब में था।
यार ये क्या है? It seems we found the key to the safe. एक चाबी मिली है, लगता है इसी ताले की चाबी होगी। So, Bernard Marley built a mechanical globe. This globe has space inside. It should be possible to open it. तो लगता है यही ग्लोब जो है क्लब में है। Marley dismantled these alarm clocks for their parts. तो इसने अलार्म क्लॉक के पार्ट्स यूज़ करके उस स्टैचू के अंदर डाले हैं। The statue is in 3 parts. Only the gold is original. Marley must have reconstructed the other 2. The statue is in 3 parts. Only the gold is original. The statue. यहाँ पर एक लेटर है, आई नो आई एम द चोजन वन, टेकुन वुमन वांट्स टू यूज मी फॉर दिस हिज पर्पस, ओ गॉड प्रोटेक्ट मी, आई डोंट वांट टू डाई। अच्छा, A piece of a map in metal. This object evidently connects to something else. This part is in solid gold. It's worth a fortune. It's almost daylight. The workers will be here soon. It's time to leave. What should we do next? चलो Holmes? चलो मिस्टर वाटसन, हमारा काम यहाँ पर हो गया। मतलब इस स्टैचू को 3 हिस्सों में बांट के तीनों ने एक दूसरे के साथ ले लिया। तो अभी हमें कहाँ जाना है? तो क्लब चलते। और दोस्तों मैंने फिर से वो जो सीन है उसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर दिया है, जो क्या कहते हैं, जो घोड़ा गाड़ी वाला सीन है जिसमें जो कार्ट के अंदर से जाते हैं शर्लक होम्स, वो सीन थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया है। बाद में इनेबल कर देंगे, इसमें थोड़ा गेम जल्दी लोड हो जाता है ऐसे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, तो हम आ गए। At your service, Mr. Holmes. अरे यार सुबह हो गई फिर भी मिस्टर चार्ल्स यहीं पर रुके। At my club. What a disaster for our reputation. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. अरे ये क्या हो रहा है? टोटली मैजिक यार, क्या बात है। अच्छा, तो ये हम कहीं आ गए लगता है, ग्वाटेमाला के जो टेम्पल है उसी का रास्ता लगता है। हाँ, लगता है शर्लक होम्स की आत्मा यहाँ पर आ गई है, वहाँ पर जानने के लिए कि असलियत में क्या हुआ। हो सकता है। यहाँ पर रास्ता बंद है।
कुछ श्रापित टेम्पल लगता है यहाँ पर। अरे दरवाज़ा बंद हो गया, मतलब हम लौट नहीं सकते यार। यार ये बार बार क्या हो रहा है? यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। अरे तो जाओ कैसे? यहाँ की मिस्ट्री क्या है? यहाँ पर ऐसी क्या कौन सी मिस्ट्री जो शर्लॉक होम्स ना क्रैक कर पाए? ठीक है, ये पार्ट स्किप हो गया। चलो नीचे चलते। सॉरी दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मुझे ये पार्ट स्किप करना पड़ा क्योंकि इतना लेंदी पार्ट था कि कोई सेंस नहीं बन रहा था। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पिलर्स है। अच्छा, तो इनका दबाने से होता क्या है देखते। मतलब इस पिलर को आप जितने एंगल पे घुमाओगे उतने एंगल पे ये खुद घूम जाएगा। अच्छा, समझ गया। अब उम्मीद करते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये दरवाज़ा धीरे धीरे खुलेगा ऐसे। अच्छा, तो हम यहाँ पर गिरेंगे नहीं, अच्छी बात है ये। हाँ ठीक है।
गड़बड़ हो रहा है। यार ये अलाइन क्यों नहीं हो रहा? चलो फाइनली आ गया एक नया गेट। इसको अभी क्लोज करते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा दरवाज़ा भी खुल गया। अभी एक लास्ट दरवाज़ा बचा है। चलो हम आ गए। चलो तीनों दरवाजे खुल गए। अभी हम वहाँ से निकल सकते हैं। इस तरफ क्या है? अरे होम्स जल्दी जल्दी। इस तरफ डेड एंड है। निकलो निकलो जल्दी। अभी यहाँ से चलते 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 बहुत दूर आ गए। ये तो फिर से डेड एंड आ गया। कितनी प्राचीन जगह है यार।
या अभी तक कितने भी ऐसे पुराने जगह होंगे जहाँ जो इंसानों ने अभी तक खोजे नहीं होंगे, उनको ढूंढना भी बाकी है। ये ओ इतना बड़ा पत्थर। वापस तो नहीं आएगा ना? हाँ वापस आ रहा है। ये पत्थर वाला सीन थोड़ा रिस्की था, लेकिन कोई बात नहीं, हम फाइनली आ गए। ओ अब जब हम आ गए तब पत्थर आके रुक गया। वाह अरे वाह। लेकिन यार पत्थर नहीं हिलता तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से, तो हम नहीं आ चल पाते। इस तरफ चलते। इन्वेस्टिगेशन के लिए शेरलॉक होम्स को क्या क्या करना पड़ रहा है, और इसके लिए उसको तो किसी ने अपॉइंट भी नहीं किया इस केस के लिए, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। क्योंकि शेरलॉक होम्स को ऐसे केसेस इंटरेस्टिंग लगते हैं कि यहाँ पर हुआ था क्या। अरे हर एक टाइल हट जाएगा तो कैसे चलेगा? अरे अरे
पता नहीं इतना ज़्यादा ट्रिकी बनाने की क्या ज़रूरत है यार, लेकिन चलो आगे बढ़ते। एक अच्छा सा हॉरिफिक म्यूज़िक इन्होंने बैकग्राउंड में डाला है। हॉरिफिक, अगर हॉरिफिक भी नहीं कहूँगा तो इतना तो कहूँगा कि थोड़ा मिस्टीरियस सा म्यूज़िक ज़रूर है। यार यहाँ पर भी एक ट्रैप लगाया है इन्होंने। अरे बाप रे बाप, डर गया यार, इतने जल्दी क्या हो गया। एक चीज़ शायद समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप खेलोगे तो आप इन दोनों चीज़ों के मुंह दे सकते हो। इसका मुंह अलग है, इसका मुंह अलग है। इसके सामने जाओगे तो ये धुआं मारेगा। जिनके मुंह का रंग लाल आँख, जिनके लाल आँख है वो धुआं छोड़ते हैं। मतलब हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें उस तरफ से घूम के ही जाना पड़ेगा। यार बस पहुंच ही गया था मैं। अरे बाप रे, फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं यार ये, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ये भी डेड एंड है, इस तरफ से आए थे। चलो चलो सीधा सीधा चलो, जल्दी जल्दी चलो, कम ऑन।
हमें इसको कंप्लीट करना होगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर गेम के डेवलपर्स ने काफ़ी अच्छी डिटेलिंग की है दोस्तों, एकदम असली की तरह लगता है कि ये आप ज़रा सोचो कि ये पेंटिंग्स कितने सौ साल पहले होंगे, इनफैक्ट हज़ारों साल भी पुराने हो सकते हैं। ओह बाप रे बाप, जल्दी जल्दी पहुँच गए वरना ब्रिज टूटने ही वाला था। तो ये रहा मायान पिरामिड या फिर मायान टेम्पल। वैसे ये पिरामिड की तरह ही दिखता है, टेम्पल तो कम दिखता है। पूरी तरह से एक गुफा के अंदर ही है, बस ऊपर से थोड़ी सी जगह खुली है। ये तो यहाँ पर मशाल भी जल रहा है। The treasure of Takunuman. हाँ No keyhole or handle. There must be a way. तो पूरे टेकोनुमान का खजाना यहीं पर रखा है। Bernard Marley, Sir Charles and Zacharias all shared. हाँ तो यही स्टैचू जो है ये लोग यहाँ से चुरा के लेके गए थे और इसको 3 हिस्सों में अपने आप को मतलब बांट लिया था, और यही स्टैचू हमने वहाँ पर फैक्ट्री में देखा था। अच्छा यहाँ पर कुछ है, ये देख सकते हो दोस्तों। अगर मैं आपको फर्स्ट पर्सन व्यू दिखाऊँ, ये देख सकते हो यहाँ पर नुकीले चीज़ें हैं, तो इस पर जैसे ही शायद कुछ हो सकता है। The calendar. It was here. So Zacharias, Sir Charles, तो and ये Marley have all known about this from the beginning. तो ये लोग मायान कैलेंडर को यहाँ से ही लेके गए थे। अच्छा यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा था यहाँ पर ब्लेड्स चारों तरफ है, अगर गलती से हो गया तो कुछ हो सकता है, लेकिन एक बार ट्राई तो कर ले। हाँ तो अगर आप हाथ घुसाते हो, अगर आप गलती से गलत वाला मतलब चूज़ कर लेते हो तो आपका हाथ कट सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है। नंबर 1 हुआ, फिर नंबर 2। अच्छा ऐसे ही जाना पड़ेगा। नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4। ओके हो गया। नंबर 5 है क्या? नंबर 5 नहीं है। ठीक है इससे स्टार्ट करते, उम्मीद करता हूँ यही ठीक होगा। हाँ ओके ओके ये भी ठीक है। तो ये इल्यूशन दिख रहा है आप लोगों को कि चार लोग कैसे आए थे। सर चार्ल्स, ज़ैकराइस ग्रेस्टोक, एल्बियट। हाँ ओह ओह ये लोग भाग गए।
तो दोस्तों अब हमें पता चल गया कि एल्बीट ने अपना हाथ कैसे गंवाया, उसका दाहिना हाथ क्यों नहीं है, तो उसका दाहिना हाथ ऐसे कट गया। मतलब प्रार्थना काम कर गई यार, पता चल गया कि क्या हुआ था। तो टेंपल की सच्चाई पता चल गई कि क्या हुआ था। अच्छा, albeit uses an adult of small stature as a killer, as he wishes people to believe that the curse killed Zacharias Greystock and at a later date the other members of the expedition. Albeit killed for revenge with an accomplice of short stature, they should both go to prison. Albeit will die soon, he is no longer able to kill anyone else. His short accomplice was used as a live weapon. They should एल्बिट को जेल ही भेज देते, देखते हैं क्या होता है। Mr. Albeit. Oh, you're here with your son. Yes, obviously. We have to talk with you, and it involves the police. I see. Gulliver, go across the road to Mrs. James. This is an adult conversation. Hold on just 1 second, please. A pygmy? As I suspected. Albeit brought him back from Brazil. You were both slaves there and you escaped together, am I correct? You are. We are companions through life to death. He's more like a brother to me. It's clear enough now. You and your accomplice are guilty to the murder of Zacharias Greystock. They had to pay for what they did. If only I'd had the time to get all of them. But Gulliver only did what I told him. It's for the judge to decide that. But given the nature of judges, I doubt that he will be lenient towards a pygmy who kills an Englishman. तो 54% लोगों ने यही डिसीजन लिया है। तो 19 क्लू मिले हैं हमें, 19 क्लू में से 19 क्लू इसे मिले हैं। तो एक्सेप्ट कर ले डिसीजन को, या फिर कोई नई तरफ मूव कर जाए। क्या एल्बर्ट को जेल भेजना चाहिए या छोड़ देना चाहिए?
वो जेल ही जाना चाहिए क्योंकि मर्डर किसी के लिए भी ठीक नहीं है। चलो 54% लोगों ने यही डिसीजन लिया है तो ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोगों ने यही डिसीजन लिया था कि अल्बर्ट को जेल भेज देना चाहिए। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इनफेमी। ओके, इनफेमी। Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Why don't you stay with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it! The great Sherlock Holmes standing in front of me! I'm sure that our two brains will... Brains. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. A map of London and its surroundings. Could be useful. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? This must be grease paint. I use the same brushes for makeup. Face powder of an excellent quality. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! यार इसने तो सत्यानाश कर दिया। Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father.
although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after Father's death, and to a man so much younger than herself. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone. After that, he stopped writing. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes, tell her. This is strange. The love letter is typewritten. Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. Miss Sutherland's stepfather's signature.
I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. It's the same letter with the same defect in both instances. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. What else can I tell you? You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? It doesn't matter. He has left and he will never come back. There is nothing you can do. Oh, Mr. Holmes!
No, I cannot forget him. I shall be true to Hosmer. I shall wait for him. Goodbye, Mr. Holmes. Holmes could have been more diplomatic. What is going on? Mr. Holmes, is everything all right? Oh, God. Calm down, Toby. Now, let's see what this contains. It's ticking. इसके अंदर कुछ है लगता है, टिक टिक आवाज़ कर रहा है, कहीं टाइम बॉम्ब तो नहीं? I see wires inside. They could be connected to the cover. A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. A source of electricity for the detonation. Aha! This solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. A package with explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. A fancy Fast forward हो गया. from a secret admirer. I have 2 minutes to defuse it. Aha! This solenoid protects the bomb. If it loses its power supply, it will... A package with a source of electricity for the detonation. There are wires. Whew. फाइनली बॉम्ब डिफ्यूज What हो गया happened? यार. Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Now, let's take a look at that jacket. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Who tried to kill me, Mr. Holmes? JT are the owner's initials. Let's see what's inside.
There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else. There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into Yon Harbor. Why? I need to finish here first. That's not the one I need. Here it is. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. तो दोस्तों हमारा थर्ड चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज का एपिसोड ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। 1 घंटा 20 मिनट का शायद ही हमारा सबसे लंबा एपिसोड हो सकता है आज तक का। तो ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो पहले एक बार चेंज कर लेते क्योंकि निकलना पड़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। एक लाइक से जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आपके जो भी थॉट्स है। अब आगे किसी गेम की सीरीज़ देखना चाहते हो तो वो मुझे आप नीचे बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो की उसकी भी गेम प्ले सीरीज़ आपके लिए जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, जैसा कहा, सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में। देखते हैं शर्लॉक होम्स क्या करते। तो तब तक के लिए ऑलवेज स्टे हैप्पी।